एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में। सो ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मेनली बैक्टीरिया में, प्लांट्स में। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एज वेल एज प्रोटिस्ट। लेकिन ये जो ग्लाइकोलेट साइकिल जो प्रेजेंट है वो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। सो लेट अस सी हाउ दिस ग्लाइकोलेट साइकिल इज वर्किंग। सो यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट साइकिल जो प्रेजेंट है, प्लांट्स का एक ऑर्गेनल्स में ये साइकिल हो रहा है, दैट इज नोन एज द ग्लाइऑक्सिजोम। ओके, ये जो ग्लाइऑक्सिजोम जो प्रेजेंट है वो क्या है? ये जो ग्लाइऑक्सिजोम जो प्रेजेंट है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सीजोम। और ये जो साइकिल जो प्रेजेंट होता है, इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? ये जो साइकिल जो प्रेजेंट होता है, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो चाहिए इसको होने के लिए, दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो प्रेजेंट है उसको दो मॉलिक्यूल चाहिए इस साइकिल को होने के लिए। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज प्रेजेंट, इट इज ए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसका चाहिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए? इस प्रोसेस को होने के लिए चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, and during this time what happens, there is utilization of NAD plus for the conversion of NADH and H plus. Okay, और ये क्या होगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए का रिलीज होगा एंड इट विल फॉर्म सक्सीनेट which is a 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो 2 कार्बन का कंपाउंड था विच वॉज अ एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसका 2 मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन हुआ टू फॉर्म द सक्सीनेट। ठीक है, और ये प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए? इस प्रोसेस होने के लिए चाहिए NAD प्लस, जो कि कन्वर्ट करेगा NADH में और H प्लस में, एंड ऑल्सो देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द रिलीज ऑफ कोएंजाइम ए। दिस इज द ओवरऑल थिंग विच विल टेक प्लेस इन द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इट इज द starting product and this is the end product which it is a output from this glyoxylate cycle. Okay, ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो प्रेजेंट है, इसका कुछ इंटरमीडिएट्स सेम होता है टू द क्रेब्स साइकिल। सो चलिए देखते हैं पूरा होल प्रोसेस एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का कैसे होता है। सो व्हेन वी डिस्कस हियर अबाउट द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ये स्टार्टिंग होगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, क्रेब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट होता है विच इज नोन एज ऑक्सालो एसिटेट। ओके, ये जो ऑक्सालो एसिटेट जो प्रेजेंट होता है, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, सो दिस ऑक्सालो एसिटेट विच इज प्रेजेंट, इट इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू सिट्रेट। ओके, और ये सिट्रेट को कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स वन ऑफ द एंजाइम, द फर्स्ट एंजाइम विच इज नोन एज सिट्रेट सिंथेस का मतलब क्या है? इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द सिट्रेट मॉलिक्यूल। और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए 2 कार्बन कंपाउंड जो कि है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से निकल जाएगा कोएंजाइम ए। ओके, सो क्यों चाहिए ये वाला? यहाँ पे था ऑक्सालो एसिटेट जो प्रेजेंट है वो एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो प्रेजेंट है वो एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दिस 2 विल बी यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ ऑक्सालो एसिटेट इनटू द सिट्रेट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम व्हिच इज नोन एज सिट्रेट सिंथेस। और इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए का रिलीज होगा। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल रिलीज इट्स कोएंजाइम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिट्रेट जो प्रेजेंट है, ये है एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इस सिट्रेट से क्या होगा? आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए। व्हाट इज दैट एंजाइम? इट इज एकोटिनेज। ओके, एकोटिनेज के प्रेजेंस में सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, और ये आइसोसिट्रेट भी कितना कार्बन कंटेनिंग? इट इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, ये जो स्टेप जो प्रेजेंट है, इट इज सिमिलर टू द क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट स्टेप जो प्रेजेंट है, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ आइसोसिट्रेट इनटू ग्लाइऑक्सिलेट।
ग्लाइऑक्सिलेट। ओके, ये आइसोसिट्रेट जो प्रेजेंट है वो ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, ड्यू टू विच साइकिल इज नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इस आइसोसिट्रेट से जो ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, इसके लिए चाहिए एक एंजाइम विच इज नोन एज आइसोसिट्रेट लाइएज। ओके, ये क्या करेगा, ये जो आइसोसिट्रेट जो प्रेजेंट है, in presence of this isocitrate liase it will be divided into two parts। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ दिस आइसोसिट्रेट। दिस आइसोसिट्रेट जो प्रेजेंट है वो स्प्लिट होगा सक्सीनेट, सक्सीनेट और ग्लाइऑक्सिलेट में। सक्सीनेट जो प्रेजेंट होता है इट इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और ग्लाइऑक्सिलेट जो प्रेजेंट होता है इट इज ए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कहाँ से आया ये सक्सीनेट और ग्लाइऑक्सिलेट? आइसोसिट्रेट से। इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइएज इट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट और ग्लाइऑक्सिलेट। ओके, सो ये ग्लाइऑक्सिलेट जो प्रेजेंट होता है इट इज ए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड द सक्सीनेट विच इज प्रेजेंट इट इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, so this is another one step which is present only in the glyoxylate cycle. This is not present in the Krebs cycle. Okay, now ये जो glyoxylate जो present होता है ये convert होगा malate में। Okay, malate में convert होगा glyoxylate. So for this what it requires acetyl coenzyme A which is a 2 carbon containing compound, और इसका utilization होगा and here the coenzyme A will be released for the synthesis of this malate। क्यों? ये जो ग्लाइऑक्सिलेट जो प्रेजेंट है वो एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये मैलेट जो प्रेजेंट है इट इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो दिस ग्लाइऑक्सिलेट विच इज प्रेजेंट व्हाट इट रिक्वायर्स ए 2 कार्बन विच इज प्रोवाइडेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो इस प्रोसेस को होने के लिए एक एंजाइम का जरूरत है विच इज नोन एज मैलेट सिंथेस। ठीक है, नाउ ये मैलेट ऑलरेडी सिंथेसिस हो चुका है, इसको कन्वर्ट होना है फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इट रिक्वायर्स मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजिनेस। ओके, जैसे ही डिहाइड्रोजिनेस का यूज होगा देन दिस NAD+ will be used for the conversion of NADH+ H+. Okay, so what are the extra steps which are present in this glyoxylate cycle? It is the isocitrate liase and malate synthase. Okay, these are specific for the glyoxylate cycle. This is not common for the Krebs cycle. So now let us see what is taking place. ये जो similar type, there are similar types of enzymes which are used in Krebs cycle, and there are specific enzymes which is present in glyoxylate cycle. Okay, which is present in glyoxylate cycles are isocitrate liase, and the other one is malate synthase। और जो साइट्रेट सिंथेस जो प्रेजेंट होता है it is present in the Krebs cycle as well as ecotinase and malate dehydrogenase which is present. It is present in both Krebs cycle as well as glyoxylate cycle. Okay, so questions can be asked that which enzymes are commonly present in Krebs cycle as well as glyoxylate cycle, or they can ask which is present only in Krebs cycle, which is present only in the glyoxylate cycle. So what happens here? Here the 4 carbon containing compound which is known as a succinate has been synthesized. So what is the work of this succinate? Succinate which was present, it should have some work because this is being brought by this glyoxylate cycle. So what happens is succinate which is present, it will be converted into oxaloacetate and it will be transferred into mitochondria. Why? Because it will follow the Krebs cycle. So oxaloacetate is being utilized in the Krebs cycle. So the succinate which is present, which is a 4 carbon containing compound, it will be converted into oxaloacetate and transferred into mitochondria during the Krebs cycle. The second thing is that it will be transferred, the succinate which is present
it will be transferred succinate which is present, it will be transferred into cytosol. Okay, and in the cytosol it will be converted into oxaloacetate which will undergo gluconeogenesis. Okay, it will undergo gluconeogenesis. This is how the succinate is working in the mitochondria as well as in the cytosol. And the gluconeogenesis means conversion of glucose for the formation of glycogen. It is being used. This is a energy consuming process. Okay, and from this Krebs cycle energy is being given out. We can get energy get from this Krebs cycle. So let us again see this pathway of this glyoxalate cycle. So here the cycle starts from oxaloacetate in presence of the enzyme citrate synthase and acetyl coenzyme A. There is formation of oxaloacetate into citrate. Oxaloacetate, it was a 4-carbon containing compound. Acetyl coenzyme A which is present, it is a 2-carbon containing compound. The citrate which is present, it is a 6-carbon containing compound. So this citrate synthase which is present, it is present in both glyoxalate cycle as well as in the Krebs cycle. Okay, now the citrate which is present, it will be converted into isocitrate in presence of the enzyme aconitase. Okay, so isocitrate is also the 6-carbon containing compound. Now this isocitrate which is present in presence of the enzyme isocitrate lyase, it will be broken down into 2 parts. That is a 2-carbon compound which is known as glyoxalate and a 4-carbon containing compound which is known as succinate. Okay, now this glyoxalate, as it is a 2-carbon containing compound, it will be converted into a 4-carbon containing compound which is known as a malate. So for that it requires another 2-carbon containing compound which is provided by acetyl coenzyme A, and water is used in this case, and there is removal of coenzyme A. In presence of the enzyme malate synthase, malate is being synthesized. Now this malate which is produced, it will be converted into oxaloacetate. Malate will be converted into oxaloacetate. So for that it requires malate dehydrogenase. When dehydrogenase is present, NAD plus will be used for the production of NADH and H plus. Okay, so this oxaloacetate will again be produced. So what is the work of the succinate? The succinate will help in the Krebs cycle, as well as it will help in the gluconeogenesis. Okay, so this was all about the glyoxalate cycle. So in the next class we will